I'm just going to little brief on all of this. So when I say demographic shift, okay, तो जैसे मैंने बोला पहले जॉइंट फैमिलीज होते थे, फिर सिंगल फैमिलीज या न्यूक्लियर फैमिलीज आए थे. आजकल there are people that are moving out or moving into cities for work, for education, etc. Right? तो पर dwelling के जितने लोग रहते हैं वो कम होता जा रहा है. Okay, as we move towards the future. And growing density convergence, regional urbanization. So जैसे मैंने बोला, people usually shift into cities for work, for health, for education, etc. तो आपका जो urbanization है वो uniform नहीं है. Okay, certain pockets of higher densities are usually there. तो density कहीं कहीं पे ज्यादा हो जाता है, कहीं पे lesser हो जाता है. Solid population growth. Okay, when I say this, I'm saying जो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा लोग आ रहे हैं एंड एवरीबडी वांट्स टू स्टे क्लोजर टू वर्क. उनको काम के बगल में रहना है, उनको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है. तो क्या हो जाता है, जो मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द कोर एरियाज ऑफ द सिटी, तो ऑटोमेटिकली एवरीबडी वांट्स टू स्टे इन द सिटी, राइट. तो जो कोर के प्राइसेस है, मतलब ऑलरेडी जो लैंड है उतना ही अकोमोडेट कर सकते हैं ना आप. वर्टिकली जा सकते हो, हॉरिजॉन्टल के लिए तो वहां पे जगह नहीं होती है. तो वर्टिकल जाते जाते automatically cost बढ़ जाता है. When they want to stay closer to work, get access to better infrastructure, better transport, everything, automatically higher prices हो जाते हैं. So this is one way of how costing of housing is influenced. फिर supply and demand. तो okay, not dwelling, sorry, dwellings again. Um, so shortfall in the number of dwellings to the number of households. Okay. So smaller family size, strong psychological desire for home ownership. So जैसे मैं बोल रही थी, 1 lakh of people are there. Okay, average of say 4.5 people per household. या household size of 4.5 में क्या हो जाता है? You need 22.5 thousand of households. Okay, तो number of dwellings उतने अगर 22.5 नहीं है, फिर gap आ जाता है. That is the demand supply gap that we were talking about. Okay, and आजकल जैसे मैंने बोला, people are moving out, so automatically smaller family sizes. So these are all interrelated. I understand कि supply or demand is indirectly influenced by your demographic shift, but I'm just trying to tell you कि ये particular factor से कैसे influence हो रहा है. फिर economic policies and innovation and financial instrument. Okay, so a lot of people आजकल घर खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं. ओके, एंड यू नो कि अगर कार्स में या कुछ और चीज में इन्वेस्ट होते हैं तो डिटीरिएट होता रहता है. Whereas when it comes to say things like gold, silver, or say land, automatically your growth is inevitable. है ना? कभी कभी ग्रोथ ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, बट there is always growth is the logic. Okay, your inflation is going to keep all of these prices high. तो जो प्रॉफिट्स आ सकता है लैंड से, हो सकता है कि आपका जो, मतलब आप खुद का ही घर एग्जांपल ले लो, जहां पे भी रह रहे हो, वो पर्टिकुलर एरिया में 1 cent of land or 1 square meter of land would have been a particular amount when your parents came in there or when your parents bought that particular piece of land, etc. But right now, आजकल जो उसका मार्केट रेट होगा वो कहीं ज्यादा होगा. मतलब आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरा घर जब बन रहा था और अभी जो है, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक डबल और ट्रिपल द प्राइस. एंड दिस केस विल डिफर डिपेंडिंग ऑन कौन से सिटी में लोकेटेड हो, वहां पे क्या प्रोजेक्ट्स आ रहा है, उसके प्रॉक्सिमिटी में, उसके बगल में क्या है. जो फैक्टर्स है दैट विल इन्फ्लुएंस द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ओके, मल्टीप्लायर जो है वो दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स, बट इट विल डेफिनेटली इंक्रीज. इफ एट ऑल इट इज डिक्रीज, ठीक है, तो बहुत रेयर केसेस में होता है. अगर वो डिक्रीज हो रहा है, वो क्यों होगा? दैट्स बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर. मतलब लैंड खुद से इट विल नॉट हैव एनी नेगेटिव थिंग, बट वेयर एज लेट्स से फॉर एग्जांपल वहां पे पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इट इज वेरी फार फ्रॉम वट एवर प्लेस दैट यू हैव टू बी इन, ऐसे ऐसे चीजों से इट विल नॉट हैव अ बिग ग्रोथ. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. ओके, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग और लैंड में हायर है, विच इज व्हाई एवरीबॉडी इज मूविंग हियर. देन देयर इज अ लॉट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल. हाउसिंग लोन्स जो है उनके लिए बहुत लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिल जाता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू टेक say SBI or these public sector banks, all of them would give you say personal loans at a rate of say 14-15%.
और 12-13%। बट हाउसिंग लोन्स जो होता है वो 10 से नीचे हो जाता है। वाई? बिकॉज यू हैव अ लॉन्गर पीरियड, यू आर टेकिंग अ लार्जर सम, एंड हाउसिंग trigger करने के लिए you have a lower interest. And I'm not sure how many people know this, but housing loans लेने के लिए, if you're a woman and if you, so these are the kind of policy changes that are triggered. Okay, so if you're a woman and if you want to own the house, or if you're the owner of that particular house or property, फिर उसमें interest rate 1% कम हो सकता है। ऐसे there are certain incentives like this. Okay, एक second. ओके, फिर पब्लिक पॉलिसी अगर देखना है, वी हैव डीरेगुलेशन एंड लैंड यूज जोनिंग। ओके, सो व्हेन यू demarcate a particular land, so you all know how zoning is done, right? Say for example, ये एक सिटी का मैप है, ठीक है? फिर there are plots that are there in that city। मतलब I'm trying a very rough thing, I'm not even, it's सही नहीं है, I'm telling you this अभी से, but they usually mark, say for example, यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया होगा, ये पर्टिकुलर एरिया दूर जो है, दे विल हैव इट एज इंडस्ट्रियल हियर, ऐसे ऐसे करके दे एक्चुअली जोन इट। तो रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे भी डिमार्केटेड है, ऑटोमेटिकली आपको वहां पे रेसिडेंशियल डेवलपमेंट तो होगा। ओके, तो ऐसे लैंड यूज जोनिंग की वजह से, पब्लिक पॉलिसी इंसेंटिव्स की वजह से हाउसिंग कैन बी इन्फ्लुएंस।